हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड वंस अगेन। सो आज हम क्यूब रूट की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एंड मोस्ट प्रॉब्ली विल फिनिश दिस चैप्टर टुडे। गेट स्टार्टेड विद दिस क्यूब रूट का चैप्टर, द स्क्वायर एंड क्यूब रूट। ओके, सो हियर you must have seen we have done all this, but just try to focus once again. What it says is observe that each prime factor of a number, any number you take 4, 6, 15, 12, or like 64, 206, 3375, 172, there can be any number you take, right? Their prime factors, they appear three times, right? This is what the concept of cube, that it has to appear three times in the prime factorization of its cube. So whatever the number is, if we have to find the cube, right, their factors will always be in prime number. And if those prime numbers, those factors values, if they come in triplet means the number repeated three times. Okay, so if we see here, these are the basically prime factorization of number. Let's say if we say 4, 2 into 2. So 2, we know that this is a lowest prime number, right? If we have to, let's say 16 also, what would be 2 into 2 into 2 into 2? 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. But the factors are all prime, right? We can write this way also, 2 into 6, right? 2 into 8. But again, we have to break the 8. 8 is 4 into 2. Then again we have to break the 4. It is 2 into 2. So altogether 1, 2, 3, 4 twos. So, and twos, we know this is the prime number. Likewise, if we see 216 is the cube of 6. So if we take the factorization, just take the factorization 2, so it would be 2 ones are 2 and 0, 2 8s are 16. Now again 2, what would be 2 5s are 10, 2 4s are 8. Again 2, if we take, it would be 27. Now it will take 3 9s are 27, then 3 3s are 9, and again if you want to do, you can do it, else you can leave it. So if you see 216 is equal to how much? 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. So we see here the factors are, these factors are prime numbers. And then if we see the factor, the 2 is repeated 3 times, we can write this is 2 power 3 multiplied. This one we can write 3 power 3, and we know we can write this one 2 into 3, because power is same on both, we can write this way. So it means 2 into 3 6, 6 power cube. So 6 if it is multiplied 3 times, we get 216, right? So observation is what? Observation is either we are trying to find out the squares or we are trying to find out the cubes, right? If we do the factorization, all factorizations would be a prime number. Okay, next. Now find the cube roots of these numbers. How would you find? If you remember the table, we had 1 ka cube, 2 ka cube, 3 ka cube, 4 ka cube, right? We know this is the 4 ka cube, right? But how do we find out? When you have to write in the exam, what we do? Either it is a square number or it is a cube number. Take the prime factorization, right? So 64 will take the prime factorization. Let's start with 2 because ending with 2, so it will end. So 2 3 is 6, 2 2 is 4. Again 2, this is 16. Again 2, this is what? 8. Again 2, this is what? This is 4. Again 2, this is what? This is 2. Again 2, if you put, this would be 1, right? 64 cube root, we need to write 3. This is the symbol. This means this is read as what? Cube root of 64. This is what we have to find out. So we can write this one, let it be 3 here. This 3 just indicate that if you have one triplet, means a number repeated 3 times, then you can take out 1, right? So let's write out the prime factorization. What we received 2 into 2 into 2, right? 2 into 2 into 2. Now see, this is one triplet.
this is one triplet. So what will happen? Out there will be one from here and one from here. So 2 into 2. What it means? 4. So this is the answer. What it means, taking the cube root means the number you have to obtain, which if you multiply 3 times to itself, you will get this number. Just check 4 into 4 into 4. What is this? 4 4 ja 16. Multiplied by this 4, how much? 16. So whatever we found, that is correct. Let's go to the second one. 5 1 2. Again, what we'll do? We have to write in the exam, so we'll take the prime factorization. So 2 2s are 4, balance 1, 2 5s are 10, balance 1, 2 6s are 12. Now again, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16. Again 2, 2 6s are 12, 2 4s are 8. Again 2, this is 32. Again if we take 2, it is 16. Again if we take 2, this is 8. This is again if we take 2, this is 4. Again if we take 2, this is 2. And then again if we take 2, this is 1. So if we have to find out the cube root of 512, this will be equal to how much? How many times? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 times. So 2 into 2 into 2, then again 2 into 2 into 2, and then again 2 into 2 into 2. And now we know this, don't forget to write here 3. So now we have to take the triplets. So 1 is here, 2 is here, 3 is here. So we have 3 triplets. We'll take out 1 2 from here, 1 2 from this group, and 1 2 from this group. So 2 2s are 4, 4 2s are 8. 8 is the answer. The cube root of 512 is 8. Okay. Now 7 to 9. Take the prime factorization. Will it go by 2? No, because the last digit is 9. It should not. It will go by 3, I believe. So 3 1s are 3. 3 2s are 6. 3 4s are 12, and 3 3s are 9. Then 3 8s are 24. 3 1s are 3. Then again 3. This is going to be 27. This is again 3. This would be 9. This would be again 3. This would be 3. Right? And this would be again 3. This would be 1. 7 to 9 is equal to how much? 1, 2, 3, 4, 5, 6 times, right? So 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. So you see here, one triplet from here to here, second triplet here to here. So we will take what? 1 3 out from here and 1 3 from here. So it is 9. So cube root of 7 to 9 is 9. You can match with the table which we have done in the last class, or you multiply 9 3 times, you will get 7. Next, successive difference. This is basically not very important, but it is just that you observe these things, right? What is the difference between a term and the preceding term, right? That is called successive difference. We know that the differences between consecutive perfect squares give the sequence of odd number. This we know. Perfect squares are what? 1, 4, 9, 16, 25, right? So if we write, this is what? This is 1 chi square. This is what? This is 2 chi square. This is 3 chi square. This is 4 chi square. This is 5 chi square. This we know that if it is continuous perfect square, then we have these numbers coming. Observe the figure below where the differences are computed successively for perfect square. After 2 levels, all the differences are the same. दो level के बाद differences become same. What does this mean? This is 1, 4, 9, 16, 25, then 32. It will keep on going. So if you see the difference here, 1, 2, 3, how much? 4 minus 1, 3. This difference, 5. This difference, 7. 16 minus 9, 7. This is 25 minus 16, 9. 36 minus 25, 11. This is level 1. Now again, if you take the difference of these, see 3 or 5, the difference is 5 minus 3, 2. This difference 2, this difference 2, this difference 2. So level 2, the difference becomes constant. So compute successive differences over levels for perfect cubes until all the differences at a level are the same. What do you notice? So they are saying, can you do it for the perfect cubes, and what do you notice? Let's do it for the perfect cubes, right? Let me delete this. Let's take the numbers. So 1, then 8, then 27, 64, 125, and 216. So first level is what? Just take the difference from here. How much is the difference? 7. What is the difference here? 27 minus 8, 19. This one, 14 minus 7, this would be 7, and this would be 5 minus 2, 7. Again this one, so 125 minus 64, 5 is 4, 1,
and 12 is 66. This one is 61. We did it wrong here. So 64 minus 27. This is 14 minus 7 is 7, and this one is 5. This should be 37. This is again to this. So 216 minus 1 2 5. 6 minus 5 1. 11 में से 12 का 9, and this cancel out. This is 19. This is the first level difference. Now let's go to the second level. Second level, again we have to take the difference. Take the difference of it. 19 minus 7. How much? Is it 12? How much this is? 7. 7. So 37 minus 19. 18. What is this difference? 61 minus 37. This is 24. What is the difference here? 91 minus 61. This would be 30. Now we see in the second level, again in the second level here, when we do for the perfect squares, the difference becomes in the second level, the difference becomes constant. But when we do it perfect cube, then it becomes same in the third level. Let's go for the third level. Now we see 12 minus 18, how much? 6. 18 minus 6, how much? 6. 24 minus 30, how much? 6. So becomes constant. Difference is constant at third level. तो ऐसे ही याद रख सकते हो कि थर्ड मीन्स 3, क्यूब में कितना होता है? ट्रिपलेट. सो थर्ड लेवल इट बिकम्स कांस्टेंट, स्क्वायर it becomes constant at the second level. Okay, now okay, a pinch of history. What is the history behind them? So it is all about that. The first, it says the first known list of perfect squares and perfect cubes were compiled by the Babylonians around 1700 BCE. So BCE, 1700 BCE, just think of the time. Today, now we are in 2026. And then we'll go back to 0. And from 0, you go back to in the negative direction 1700 years. So 2600, let's say 2026 and plus 1700. Almost 3700 years back, Babylonians is nearby the Mesopotamia. There is a country which is known as like Iraq as of now. They were first, they listed the what? Perfect squares and perfect cubes. Just to know, this is general knowledge. Second, in ancient Sanskrit mathematics, so पुराने जमाने में तो लोग क्या होते हैं, मैथमेटिक्स जो भी पढ़ते थे संस्कृत में पढ़ा करते थे, राइट? तो उसमें क्या दिया गया था? वर्गा. स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग. वर्ग क्यों कहते हैं? आपने ये पढ़ा, ये जो फिगर है इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर. इसको हिंदी वाले जो स्टूडेंट हो उसको बोलते हैं वर्ग, है ना? So from here only they said in Sanskrit they used to say varga, refer to both a square figure and the square of a number. Square figure को भी make it a point. Square figure मतलब इस फिगर को भी वर्गा कहते थे, and square of a number, कोई perfect square है उसको भी कहते थे. जैसे 6 का स्क्वायर हो गया तो 36. This number, not this, I always said this number. So this is a perfect square, right? ये perfect square number है. 6 का वर्ग, इसको पढ़ेंगे कैसे? 6 का वर्ग या स्क्वायर ऑफ 6, तो उसको वर्गा. इंपॉर्टेंट इज नॉट इज दैट वी यूज टू कॉल देम इन संस्कृत वर्गा, राइट? देन व्हाट वी यूज टू कॉल क्यूब. क्यूब को हम लोग कहते थे घना, को हिंदी में कहते हैं घन. घन किसको कहते हैं? ये हमने देखा था क्यूब में, राइट? इस तरह से हमारा एक बनेगा. तो एनी इमेज लाइक दिस आर कॉल्ड घन, और एनी नंबर, लेट्स से 4 का क्यूब इज 64. सो इसको हम पढ़ेंगे 4 का घन, 4 का घन कितना हो गया? 64. और इसी को इंग्लिश में जो हम लोग भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? क्यूब ऑफ 4. सो लिटरली इफ यू से द क्यूब मीन्स घन. द फोर्थ पावर वाज कॉल्ड वर्गा. वर्गा, फोर्थ पावर. लेट्स से एनी नंबर 4. स्क्वायर we call it varga, varg. If it is cube, we call it ghan. And if it is 4 ka power 4, we call it varg, varg. Why 2 times? Because you know by now 4 square what we can write? 4 ka power 2 multiplied by 4 ka power 2, right? We know the power gets added and it becomes 4 to the power 4. So this is 1 varga, this is 1 varga. This is why 2 varga, varga. These terms were used in India from at least the 3rd century BC. 3rd century BC, 3rd century means 200 to 300 years before Christ. These terms were used in India. But first of all, where it was used? It was used in Babylonia, right? This is somewhere in nearby Mesopotamia, which is right now it is somewhere in Iraq, right? Now, 4th point. The mathematician Aryabhatta explained that, who was Aryabhatta? Is our country India, right? He was a great philosopher, mathematician. The square figure and the number representing its area are called varga.
What he said, a square figure like this is square figure, or its area. So area only, no, we have seen if we write 6 into 6, 6 by square, it means it has got 6 length, 6 height, and since in Varga everything is same, so we simply say, so any two number if it is multiplied twice, that gives the Varga of this number. So if there is a square of side 2, we say the area of square would be 2 into 2, it means 4, let's say it is centimeter, 4 centimeter square. इसको पढ़ेंगे वर्ग सेंटीमीटर. This is what the Aryabhatta was saying. Okay, the product of two equal numbers is also called varga. He's saying the product of two equal numbers. Yes, this is what we have been doing, right? When we try to find out the square numbers, it means the number must be multiplied by itself. Then we call the perfect square. Same thing is said. The product of two equal numbers is also called varga. उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? Varga or square. We do it. We say it, right? Point 5. The mathematical term root comes from the Sanskrit word moola, which means root of a plant, basic cause and origin, right? So इसको अब आगे देखोगे, ये जो स्क्वायर रूट इस तरह जो लिखते हैं ये सिंबल, इसको पढ़ा जाता है वर्गमूल. आप हिंदी की किताब देखो उसको बोले वर्गमूल निकालिए. अगर मैं ऐसे लिखता हूं रूट 64, इसका मतलब वह 64 का वर्गमूल निकालिए. मतलब अगर क्वेश्चन में दिया है तो इस तरह से लिखेंगे वो. इसका मतलब इस सिंबल का मतलब क्या हो गया? वर्गमूल. ठीक है. इंग्लिश में आप क्या कहते हो? इसको कहते हो स्क्वायर रूट. ठीक है. रूट कह रहे हैं ना. रूट का मतलब इसका बेस कहां है, मतलब वो क्या नंबर है, बेसिक नंबर क्या है, उसी से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाए. तो ये क्या हो जाएगा? इसका जो बेसिक नंबर क्या है इसका 8 into 8, बाहर कितना हो गया 8. तो इस वर्ग इसका अगर 64 का वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो किस नंबर से बना है, मतलब उसका बेसिस क्या है, उसका रूट क्या है, उसकी जड़ क्या है. तो फाउंडेशन इज दिस 8. इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्गमूला भी कहते थे. ठीक है. इन संस्कृत वर्गमूला मीन्स स्क्वायर रूट. ठीक है. वही हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट. घन का मतलब क्यूब रूट. सो दिस वाज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस. नेक्स्ट, figure it out. Find the cube roots of this and this. Simple here. What we'll do? We'll do the prime factorization and we'll try to find out if there are triplets. We'll take one out and then we try to find out the square cube root. Let's find out. So it is 2700. The first one 27. Okay, 1000. My bad. So let's say start with 2. 2 ones are 2. 2 3s are 6. 2 5s are 10. Then 0 and 0. Again 2. This will be 2 6s are 12. 2 7s are 14. And 2 5s are 10. Again it will be 0. Again if we go with 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 7s are 14 and 2 5s are 10. Can we go with 2 again? 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16. No, it will go by now 7 5 12 12 3 12 3 15 3 18. So it will go by 3. There will be no division by 2 now. So we will go with 3. 3 ones are 3, 3 ones are 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15. We'll go again by 3. So 3 3s are 9, 2, 3 7s are 21, balance 1, 3 5s are 15. Again we'll go with 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, balance 1, 3 5s are 15. Now it will not go with 3 because it has got the end 5. So it will go with 5. We'll start with the 5. So 5 2s are 10, balance 2, 25, 5 5s are 25. Again 5 will have 25. Oh, sorry. This will be 5 5. Again 5. This will be 1. So if we see what we have to find out, cube root, right? So 27,000. Please mind it. You have to write 3 if you are finding the cube root. If you are finding the square root, you don't have to, right? By default, if this sign is given, it means square root by default. But if you have to find the cube root, you have to give 3. What it indicates is if there would be anything in the triplet that would come out. Okay. So now this equal to how much? Prime factorization of this, how much? 2 into 2 into 2, then it's a 3 into 3 into 3, correct? Then it's 5 into 5 into 5. So we know there is one triplet here, one triplet here, one triplet here. So 1 will come out, right? This will be equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 5. So this is equal to 2 3 is 6, 5 is 30. So 30 would be the answer. Now second, 1 0 6 4 8. Let's find out for this. 2 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8. Again 2 2 2s are 4,
2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 2s are 4. Again 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 1s are 1. If you go, it will not divide by 2. Will it go by 3? 3 4s are 12, balance 1, 3 4s are 12, 11. No, it will not go, right? It will not go. It will not go 3, then 4, it will not go. We know that cube, any number is divisible. If it is ending with 1, it will start with either 1 or 11. So we can jump to 11. So 11 if we go, 11 1 is 11, 2 3, 11 2 are 22, and balance 1 again. Again if you do 11, it's 11. Again if you do 11, it is 1. So cube root 10648 is equal to how much? 2 into 2 into 2, and then 11 into 11 into 11. One triplet and one triplet, two triplets we have. So it will come out, so it will be 2 into 11. It means 22 is the answer. What it means? If we multiply 22 3 times, you will get this number. If you multiply 30 3 times, you will get this number. Obviously, 30 if you multiply 3 times, what happens? 30 into 30 into 30, 3 3s are 9, 3s are 27, and 3 0. So it is correct. Next, what number will you multiply by 1323 to make it a cube number? So just try to understand what it's saying is what number will you multiply by 1323? Perfect cube, right? It means this is not a perfect cube, this number. If this would have been a perfect cube, agar ye perfect cube hota, they wouldn't have asked this question. वो पूछता ही नहीं ऐसा सवाल. So since it is not, so how do we find out it is a perfect cube or not? What is the right method? We'll do the prime factorization. Let's do the prime factorization of 1323. So 1323. So it will not go by 2, it will start with 3. So 3 4s are 12, 3 4s are 12, and 3 1s are 3. Now what is this? 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 7s are 21. Will it go 3 again? Yes, it will go. 3 4s are 12, 3 9s are 26. Now it will not go by 3, it will go by 7. 7 7s are 49, right? If you do it again as we do 7 1. Now you see here 1323 is equal to what we can write? 3 into 3 into 3 into 7 into 7. Now we see here we have one triplet of 3. We don't have the triplet of 7. It is only 2. This is why this is not a perfect cube. To become a perfect cube, we have to have one more 7. One triplet, right? Then only we can have the perfect cube, right? So this is what I'm asking. So this number is multiplied by what? So that the resulting number becomes a cube number. So 7 must be multiplied to become a cube number. Till now, this is not a cube number. What it means is there is no number which when multiplied by itself 3 times, we get this. There is no number. Prime factorization we have seen. If we supply one extra 7, then this number will also be multiplied by 7. Then that number will be a cube. So let's write it again. So 7 must be multiplied to become a cube number. So this would be 3 into 3 into 3 into 7 into 7. Now we are multiplying 7 this side. I'll just do this way so that you understood कि ये extra we have multiplied. So if we have multiplied this side, so it means इधर भी आपको 7 से multiply करना पड़ेगा. You have to multiply 7 this side also. So multiplying both side by 7. क्योंकि अगर आप करोगे तो ये 7 7 cancel हो जाएगा तो आपका number remains same. So now the moment we multiply 7, so now you see this is one triplet, this is one triplet, right? So what would be 3 and this one is 7. Now check this, what this number would become. Multiply 7 3s are 21, 7 3s are 21, balance 2, 7 2s are 14 and 2 16, balance 1, 13 7s are 91 and 90. So once you multiply this and this, you will get this number. So 927 is equal to 21. So what it means is 9261 का cube root कितना हो गया? 21. अगर आपको maybe in the exam they may also say hey, just find the cube root, what that number would be. So if 20, this is the answer. So if that number 21 is multiplied 3 times, 21 multiplied by 21 multiplied by 21, you check the table we had, right? Or you just multiply by yourself, you will get this number. But the question was what number will you multiply? So you would write in the answer, we shall multiply 1331 by 7 to make it a cube number.
This would be your answer. Next, state true or false, explain your reasoning. The cube of any odd number is even. किसी भी odd number का cube even होता है क्या? It's not, right? This is false. ये हमने पढ़ा था, चाहे स्क्वायर नंबर हो, चाहे आपका क्यूब नंबर हो, इवन का स्क्वायर इवन, ऑड का स्क्वायर ऑड. सेम वे हियर, इवन का क्यूब इवन एंड ऑड का क्यूब ऑड होता है. ये हमने देखा था. If you don't remember, go back to the previous videos, you can find out. And this was discussed basis the parity of numbers, right? उसमें देखना. तो कुछ एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो. जैसे ऑड नंबर बोल रहा है. ऑड नंबर क्या हो गया? 1 का क्यूब लोगे तो क्या होगा? 1. क्या ये इवन है? नहीं. 1 क्या 3 का क्यूब लो, क्या होगा? 3 into 3 into 3, it means 27. क्या 27 एक क्यूब इवन नंबर है? नहीं है. 5 का 5 into 5 into 5, ये क्या हो गया? 1 to 5. क्या ये इवन नंबर है? नहीं. इवन नंबर किसको बोलते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो. ये सारे नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे, कुछ रिमाइंडर बच जाएगा. इसका मतलब यू गिव सम एग्जांपल एंड देन यू राइट द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन और नॉट. फॉल्स, राइट. सेकंड, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8. रिमेंबर, जब हम परफेक्ट स्क्वायर कर रहे थे तो वहां पे था एनी नंबर विच एंड्स इन 2, 3, 7, 8. दोज आर फॉर श्योर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. बट व्हाइल वी वर डूइंग द क्यूब नंबर, देयर आई सेड कौन कौन से नंबर पे एंड कर सकता है, एंड वी हैव सीन इट कैन एंड विथ एनी नंबर फ्रॉम 0 to 9. रिमेंबर, क्यूब में जाके देख लीजिएगा. कोई भी क्यूब होगा, अगर मैं 3 का क्यूब लिया, 4 का लिया, 5 का लिया, 6 का लिया, 10 का लिया, 20 का लिया, 25 का लिया, 75 का लिया, किसी का भी क्यूब लोगे तो आप एक पैटर्न देख रहे थे. हमने 20 नंबर का पैटर्न देखा था, 20 नंबर्स का टेबल जब फिल किया था, तो हमने देखा जो एंड नंबर है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो. तो अगर ये कहता है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8, दिस इज अगेन फॉल्स. क्या करना है? आपको एग्जांपल्स देने. 2 का क्यूब देखो क्या होता है? 2 into 2 into 2. 8 में एंड किया ना. कोई भी आप एग्जांपल दे देना, ठीक है. नाउ द क्यूब ऑफ ए 2 digit नंबर मे बी ए 3 digit नंबर. 2 digit नंबर का क्यूब 3 digit हो सकता है क्या? 2 digit नंबर का क्यूब. तो सबसे पहले बताओ, 1 से लेकर अगर 9 तक जाएंगे तो सिंगल डिजिट हो गया, राइट. 2 डिजिट कहां से मिनिमम स्टार्ट होगा? 10 से. तो 10 का क्यूब करोगे तो क्या होगा? 10 into 10 into 10. तो ये क्या हो गया? 1000. कितने डिजिट है इसमें? 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट. एंड मैक्सिमम वेयर इट विल गो till 99. It's a 2 digit number. So lowest we'll see. सबसे छोटा मैंने देखा वही उसी का जो क्यूब है वो क्या 4 डिजिट में. तो ऑब्वियसली जो 11 होगा, 12 होगा till 99, सारे के डिजिट्स यहाँ ज्यादा होंगे. So the cube of a 2 digit number may be a 3 digit number. This is again false. You can write the lowest 2 digit number is 10 and 10 का क्यूब is 1004 digit. So 3 digit is not possible. So इसलिए क्या हो गया? False हो गया, ठीक है. Now the cube of a 2 digit number may have 7 or more digits. अब ये कह रहा है 2 digit का जो नंबर है उसका क्यूब 7 या ज्यादा हो सकता है. 2 digit नंबर ही है तो इसका मतलब हम लोग 10 से लेके 99 की बात कर रहे हैं. तो 4 तो हमने देख लिया कि 4 तो हो सकता. तो 7 और उससे ज्यादा की बात कर रहा है तो मैक्सिमम का ट्राई कर. सबसे पहले सो नंबर 4th है दैट क्यूब ऑफ ए 2 digit नंबर मे हैव 7. तो हमने क्या किया? 10 का तो हमने देखा था, ये 4 digit का आ गया. इसका मैक्सिमम क्या है? 99. उसका हमने जब मल्टीप्लाई करोगे 99 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 99, यू विल गेट दिस. तो कितना डिजिट हो गया? 3 और 3 6. तो आप देख लो 2 डिजिट का सबसे बड़ा जो नंबर है 99 है और उसका क्यूब करते हैं दैट ओनली कम्स एंड्स विथ 6 डिजिट. तो जैसे 100 करोगे दैट वुड बी 3 डिजिट. सो इट मींस कि मैक्सिमम जो डिजिट हो सकते हैं 2 डिजिट के सबसे बड़े नंबर में वो 6 ही हो सकता है. तो क्या कह रहे हैं? मे हैव 7 और मोर. 7 या 7 से ज्यादा हो सकता है क्या? आप लिखोगे नो बिकॉज मैक्सिमम ऑफ 2 digit नंबर हैज 6 डिजिट्स ओनली. 99 का एग्जांपल दे दीजिएगा. ये भी क्या हो गया? फॉल्स, ठीक है. नाउ ये कह रहा है 5th में क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स. कि क्यूब नंबर जो होंगे उसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो हमेशा क्या होगा? वो बोलता है ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा. क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स. इसमें बहुत क्लियरली नहीं दिया है कि क्यूब नंबर्स का फैक्टर ऑड हो सकता है या नहीं हो सकता, ऐसा नहीं पूछ रहा है. तो ये स्ट्रेट वे आंसर है क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स. कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होता है नहीं.
ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेट्स से मान लेते हैं कि वो 125 ले, इसका अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 से, 5 टू ये 25 हो जाएगा, ये 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगी 5 तो इसमें कितने नंबर्स हैं, लो हाँ अपने स्टाइल में हम लोग जो करते थे वैसे ही करते हैं। ये 1 हो गया, कितने फैक्टर्स है 1 2 3। नेक्स्ट अगर हम 64 का देखते हैं क्या होता है, इसके देख 2 से देंगे तो क्या होगा 32, फिर देंगे तो क्या होगा 16, फिर क्या होगा 8, फिर क्या होगा 4, फिर क्या होगा 2 और फिर क्या होगा 1। तो कितने इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 क्या है इवन नंबर, मतलब फैक्टर्स क्या है उसके काउंट को पूछ रहा है। वो पूछ रहा है क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, होता तो है बट ये डायरेक्ट पूछ रहा ऑड नंबर ही होता है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, है ना। अगर ये कहता कैन हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या उसका क्यूब नंबर का फैक्टर जो है ऑड भी हो सकता है, देन ये ट्रू हो जाता। बट ये स्ट्रेट में पूछा क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसका ऑड नंबर ही होता है फैक्टर में, नहीं होता है, इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। सो इन दिस केस दिस इज फॉल्स। ओके, नाउ यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, आपको बताया जा रहा है कि 1331 जो है परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज। फैक्टराइजेशन आपको नहीं करना है और आपको बताना गैस करना, दिस इज व्हाट इट सेज कैन यू गैस। तो सबसे पहले देखो ये नंबर लिखते हैं 1331, राइट, ये नंबर है हमारे पास। ये कह रहे हैं कि आपको फैक्टराइजेशन नहीं करना, आप गैस करके बताओ, तो ठीक है। तो गैस करने से पहले हमेशा जो जीरोस वाले स्क्वायर्स या क्यूब्स जो होते हैं ना वो याद होने चाहिए। आपको इतना तो पता है कि ये 10 का क्यूब कितना होता है 1000 और 20 का क्यूब कितना होता है 8000। सो दिस नंबर इज फॉर श्योर इन बिटवीन 10 का क्यूब एंड 20 का क्यूब। इसका मतलब ये 10 के क्यूब और 1331 जो है 20 के क्यूब के अंदर ही होगा। इसको कहते हैं ये इस तरह से खुला हुआ है, मतलब ये बड़ा है, मतलब इसका जो क्यूब है इससे बड़ा है और इसका जो क्यूब है ये क्या है उससे ये बड़ा है, इसको कहते हैं इन बिटवीन को ऐसे। ठीक है, अब हमने जो टेबल देखा था आपको याद होगा, तो अगर किसी नंबर के एंड में 1 है उसका क्यूब नंबर भी जो है 1 से एंड करेगा। तो ये हमने देखा था, देखो मैं आपको दिखाता हूं एक बार सो दैट आपको आप रिकॉल कर लोगे। ये देखिए क्या हमने पढ़ा था, पैटर्न्स क्या देख रहे हो, देखो 1 यहाँ एंड कर रहा है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ भी 7, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है, 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, 9 है तो 9 है, 0 है तो 0। हम यहाँ पे चलते हैं फिर अपने क्वेश्चन में। ये क्या कह रहा है, ये नंबर 1 से एंड कर रहा है, तो 1 से एंड कर रहा है, इसका मतलब इसका जो ये जो क्यूब बना जिस नंबर से बना है उसके लास्ट में भी 1 ही होगा। तो इसका अगर ये बट ये नंबर क्या है 10 से बड़ा है तो उसके इमीडिएट बाद क्या होता है उसको देख लेते हैं पहले। 11, तो 11 का क्यूब निकालो क्या होगा 11 into 11 into 11, ये तो हो जाता है मल्टीप्लाई होकर 121, इसको मल्टीप्लाई करो 11 से, मल्टीप्लाई करो 121 एंड 11, ये हो जाएगा 121 और ये भी क्या हो जाएगा 121, सो 1 2 1 3 2 1 3, अरे दिस इज व्हाट 1331। तो हमने गैस वर्क करके निकाल लिया कि ये जो है किसका क्यूब है, दिस वन इज द क्यूब ऑफ 11, करेक्ट। अब वो कह रहा है कि ठीक है सिमिलरली आप 4913 का करो, चलो देखते हैं 4913। तो ये भी आप देख रहे हो कि इसी दो नंबर के बीच का क्यूब है ना, ये भी 10 का क्यूब करोगे और 20 का क्यूब करोगे तो जो नंबर आएगा उन्हीं इसी दो नंबर के बीच 4913 भी है। अब हमने क्या पढ़ा था अगेन 3, तो 3 और 7 में एक वहां पे स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट था क्यूब में कि अगर कोई 3 से एंड कर रहा है तो वो नंबर जो है 7 से बना होगा। देखिए ये रिमेंबर हमने किया था 3 से अगर कोई एंड कर रहा है तो 7 से बना होगा, 7 से कोई एंड कर रहा है तो 3 से बना होगा, उसी तरह कोई 2 से एंड कर रहा है तो 8 से बना होगा, कोई 8 से एंड कर रहा है तो 2 से बना होगा। देख 7 से कोई एंड कर रहा है तो किससे बना है, किसके क्यूब से 3 है ना, यहाँ पे देखो 3 है 13 है और 7 वाला कहीं है, देखो 7 वाला कहाँ 7 है तो किससे बना है एंड में 3। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे क्योंकि आपको कह रहा है कि विदाउट डूइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन यू हैव टू राइट द वैल्यूज। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 से एंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 4913 ends with 3, so its cube number must be ending in what 7। तो अब 10 के बाद देखो 7वां क्या आता है 17 आता है 17, 7 से तो वही एंड करेगा ना,
तो 17 का क्यूब करो, इसका आंसर यही होगा, आंसर 17 का क्यूब, क्योंकि 20 से ऊपर तो जा नहीं सकता, 27 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 20 में जाने पे वो 8000 हो रहा है, मतलब ये नंबर इन दोनों के बीच में है, तो बीच में 7 वाला कौन है? 17. वी हैव टू फाइंड द 17 का क्यूब टू वेरीफाई, राइट, टू वेरीफाई. So 17 multiplied by 17, if you do, what happens? 7 7 is 49, balance 4, right? 7 7 is 49, balance 4, 7 is 7 and 4 11. Now 7 and this is 1, this would be 9, 7 1 8, this is 289, right? Okay, so we'll multiply again. 289 multiplied by 17, 7 9 just 63, balance 6, 7 8 is 56 and balance 56 and 6 62, balance 6, 7 2 is 14 and 14 and 6 20, and this would be as it is 289. If we add, it's a 3, 9 to 11 ka 1, balance 1, 819 and 2 2. So that's it, 4913. What is the answer? 17. Okay, likewise they are saying that you find out for others. Say the next number is 12167. So it is actually 12,167. Let's say 20 ka cube and 30 ka cube, right? 20 ka cube is 8000. Obviously this number is greater than this. 30 ka cube is how much? 27,000, right? So this number 12,167 lies between this and this. Now we know this is ending with 7, so it is a swap number, so its cube must be ending with 3. So after 20, go which 3 you get first. So 20, 21, 22, 23. So it should be 20 ka cube. This would be the answer. You may verify also. 23 multiplied by 23. So 3 3s are 9, 3 2s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4. This is 9, 6 6 12, balance 1, 5 2 9. Now again 5 to 9 you multiply by 23. What will happen? 3 9s are 27, balance 2. 3 2s are 6 to 8, 3 5s are 50. Now 2 9s are 18, balance 1. 2 2s are 4, 1 5 and 2 5s are 10. Add it, 7 8 8 16, balance 1, 5 5 10 and 1 11, balance 1 1 1 2, and this is 12167. So this number would be 23 for sure. So this is how we find. Now the last number is also there. You can do this by yourself, but let me just do it. 32,000. It is more than what? 30,000. So this would be in between 30 ka cube and 40 ka cube. Correct? 30 cube is how much? 27,000. And this one is how much? 4 4 the 16, 16 4 the 64. So 64, and then you have 3 now. So obviously 32,768 is in between 27 and 64. So any number ending with 8, it should, the swap number, it should end with 2. So it would be after 30, 31, 32. 32. You just try to find out, this would be the answer. Okay. So without calculating also, if you have the, numbers of 10, 20, 30, 40, if you remember, then you can find out basis the rules we have learned. Now, which of the following is greatest? Explain your reasoning. This is the last question of your chapter. So, in class 7, you must have studied on formula AQ minus BQ is equals to A minus B, A square plus AB plus B. You can use this, right? It will be easy. Else, you can simply find 67 ka cube how much, 66 ka cube how much, and then your subtraction. That would be tedious task. So let's say in this question 67 ka power 3 minus 66 ka power. So here what is A? This is A. A is equals to 67. What is B? B is equals to 66, right? So we'll use this formula. Formula says it becomes A minus B. The A is what? 67 minus 66. Then what you have? 66 ka square. Let's make it big bracket, plus 66 into 67 plus B ka square is what? Oh, this is A ka square. This is 67. Sorry, this is 66 ka square. Now what will happen? This becomes 1. 67 minus 1, and then you have to again. You have to do the squares, not the cube, right? So 67 का square करो, इधर ही कर लो. 67 का square, 7 multiplied by 67. 7 7 जा 49. Balance 4. 7 6 ja 42 and 4 46, right? 6 7 ja 42, balance 4. 6 6 ja 36 and 4 40. So this would be this. This would be what? 9 6 2 8 4. So this would be, this number is
4489 plus now 66 into 67. So 66 into 67, this much you have to do. 7 6 ja 42, balance 4. 7 6 ja 42 and 4 46. Then 6 6 ja 36, balance 3. 6 6 ja 36 and 3 39. This would be 2. 6 6 12, balance 1. 9 4 13 1 14, balance 1 3 1 4. 4422, right? This would be 4422. Now 66 का square, 66 into 66. 6 6 ja 36, balance 3. 6 6 ja 36 and 3 39. Again 6396, this would be right because the same number we are multiplying. 6 9 6 15, balance 1. 9 3 12 1 13, balance 1 3 1 4 4356, right? So it would be 4356. तो ऐड करो कितना होगा? 6 to 8 8 9 17 minus 17, right? 8 9 17, balance 1. 5 to 7 7 8 15 and 1 16, balance 1. 3 4 7 7 4 11 and 1 12, balance 1. 4 4 and 4 4 3 12 1 13, so 132. I mean, this is multiplied by 1, you will have this one only 13267, right? ये नंबर आपके पास आएगा, राइट? लाइकवाइज यू डू फॉर सेकेंड थर्ड, और ये तो सिंपल है, 43 का स्क्वायर एंड 42 का स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर करके आप माइनस कर दो, ठीक है? और नहीं तो एक और फॉर्मूला होता है, इसके लिए मैं बता देता हूं। इसके लिए क्या करोगे, ये जो है 43 का स्क्वायर है माइनस 42 का स्क्वायर है, तो इस एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये तो सिंपल ये हो जाएगा 43 माइनस 42 मतलब a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, 43 प्लस 44, तो ये तो 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया 447 और 47 हो गया, और ये हो गया 448, तो ये कितना हो गया 87। इसका आंसर तो 87 ही हो गया, ठीक है? बाकी Q ये वाले भी हैं, ये क्या है 67 और 66 का स्क्वायर, तो चलो इसका मैं दिखा ही देता हूं आपको। तो अगर 67 वाला करोगे, लाइकवाइज अगर थर्ड का करते हैं 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर, अभी बताया फॉर्मूला, तो उसे एक बार ऐड माइनस करो और एक बार क्या करो ऐड कर दो, ये फॉर्मूला है 67 प्लस 66, तो ये तो 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई इसको ऐड करो 7 6 13 का 3, बैलेंस 1 6 6 12 1, तो क्या हो गया 133 हो गया। तो आपने इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, फोर्थ का इसका निकाल लिया। तो इसको अगर फिर आप कैलकुलेट करो कैसे, इस फॉर्मूला से a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए, ठीक है? इसको करोगे तो ये आपका जो वैल्यू आ जाएगा, इसको क्या करेंगे वही आप वैसे ही देखो, ऐसे 43 माइनस 42 a माइनस बी करेंगे, और फिर करेंगे 43 का स्क्वायर, है ना, प्लस ए बी 43 इंटू 42 एंड प्लस बी का स्क्वायर 42 का स्क्वायर, इस तरह से करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो नंबर आएगा वो नंबर आएगा 5419, ठीक है? तो आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कौन दिखा अभी तक तो मुझे यही दिखा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट, ठीक है? सो ओके, सो यहां पे आपका स्क्वायर एंड क्यूब चैप्टर एंड करता है आपका स्क्वायर एंड क्यूब चैप्टर। ध्यान रखिएगा स्क्वायर कैसे निकालना है, क्यूब कैसे निकालना है, और जो मैंने आपको हमेशा रेकमेंड करा था कि स्क्वायर नंबर जो एटलीस्ट 30 का तो याद रखो, क्यूब नंबर जो कम से कम 20 का याद रखो, ठीक है? और इंपॉर्टेंट क्या है जो हमने हमेशा डिस्कस किया कि अगर कुछ भी नहीं दिया रहे तो दिस सिंबल मींस स्क्वायर रूट, बट अगर यहाँ पे सिंबल के बगल में 3 दिया रहे तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है क्यूब रूट, राइट? और स्क्वायर रूट इज ऑलवेज क्या, इसमें क्या होना चाहिए 2 नंबर्स होने चाहिए, है ना, 2 नंबर्स कॉमन होने चाहिए 2, और इसमें क्या होने चाहिए, इसमें 3 नंबर होने चाहिए, ट्रिपलेट में होने चाहिए। आप कह सकते हो इसको डुएट, और इसको क्या कह सकते हो ट्रिपलेट, राइट? बाकी आप क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, अगर आपको समझ में नहीं वीडियो को फिर से देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है आई थिंक एक्सपोनेंट पावर प्ले, तो मिलते हैं उसमें। तब तक के लिए स्टे फोकस, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।